Hello everyone, welcome back to your Super20 Institutes and my name is Mata Sharma. I'm here again to teach our physics to you. Okay, now let's come to the points. So before starting our new concept or new topic, we will see what we have done yesterday in our previous class. So who will tell me that what we have done yesterday in our previous class? So we have done that is the relative permittivity and electric field intensity, and we have done the different kind of the charges which they are creating their own field, in which directions they are creating their own field. This thing we also have done, and we will see what is the direction of the electric field here, and some numericals or some small examples which is based on your electric field intensity. And we can also see that is the electric field intensity here, and its symbol is that is the capital E here, and electric field intensity, it is a vector quantity. So these things we have done yesterday. So today we will see some basic concepts or some numericals or applications which is based on your electric field intensity. Okay, now let's start with the new concept here. Concept will remain the same, but some examples which is based on your electric field intensity. So one thing we will write here, that is electric field intensity. Its symbol is E vector. That means it is denoted by the E vector here, and its formula or its final result is Q divided by R square. So this is the result. According to this, that is E vector is inversely proportional to R square. So where R is the square of the distance between them. So we will see one questions here, that is which is based on these concepts. This we have done yesterday in our previous lecture. So we will see one numerical, also one questions I am writing here. You will write on your notebook also. That is one figure is given here. You are also making a equilateral triangle. You need to make it like this, and here is point A, this one is B, and this one is C here. Here A, B and C here, and the different kind of the charges are placed on the point B and C here. If different kind of the charge, suppose that here is plus Q and here is minus Q charge. Is it clear? Now question is this, in an equilateral triangle, what is the angle between them? That is the 60 degree. Each angle is of 60 degree. And if this is an equilateral triangle and the distance between them is same, suppose that we are considering here that is the A. Clear? तो ये आपके पास distance भी क्या दिया हुआ है, small a दिया हुआ है. Questions में given है different kind of the charges are placed at the different points. Distance between the two charges are a, and this is an equilateral triangle. If this is an equilateral triangle, that means all the sides are same. So now we need to find out the net electric field at the point A. Our question is find net electric field. So I am writing here in the below term, that is find, question है आपका find net electric field at point, yes, at point A. So what is the electric field at the point A? Where is the point A? That is this one. इस पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है. So we will use these concept in this question. Clear? So first of all, who will tell me what is the direction of the electric field due to the charge plus Q? हम क्या देखेंगे, पहले वन बाय वन इन चार्जेस के अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शंस को देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं. सो यू कैन सी इन दिस फिगर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज दैट इज बी. बी पॉइंट के कारण आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है. अगर प्लस क्यू चार्ज है, हियर small charge or test charge is placed here, suppose that, which is always positive in nature, and their electric field is almost negligible. कि उसकी जो field है, field created by the tester is very small as compared to the other charges. That's why हम उसको क्या कर देते हैं, neglect कर देते हैं. So its direction is like this. Is it clear? बिकॉज ये आपके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा. सपोज दैट आपने इसको प्लस क्यू नॉट ले लिया, टेस्ट चार्ज है विच इज वेरी स्मॉल. क्लियर? देन यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई बी, दैट इज ड्यू टू द पॉइंट बी. इज इट क्लियर? सो सेकंड थिंग इज दिस, you need to find the electric field intensity due to the point C here. If you are considering here the point
point C, that means point C having a negative charge polarity. So what is the direction of the negative charge polarity? That is the electric field intensity or electric field of the negative charge is radially inward. उसकी क्या डायरेक्शन होती है? इनवर्ड डायरेक्शन होती है. कल हमने देखा था डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द डिफरेंट चार्जेस हियर. तो इसकी डायरेक्शन होती है आपके पास इनवर्ड. सो यू विल मेक इट लाइक दिस. Yes, its direction is towards the charge. Here, तो ये आपके पास जो डायरेक्शंस बन रही है, ये क्या बन रही है? Towards the charge and this is outward direction. Here, तो ये है आपके पास. You will write it EC. That is due to the point C here. फिगर आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे से बनानी है so that it is clear to you. And the angle between them is 120. कितना एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच में? That is the 120 here. Check out your figure once carefully. That is आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है due to the point B is radially outward and due to the point C is radially inward and the angle between them is 120. Is it clear? So now we need to write the electric field intensity due to the point B. So अभी हम इसका solution start करेंगे. How we can write it? Okay, I will sort it here now. आपका solution start होता है. So सबसे पहले आप क्या लिखोगे? Electric field due to point charge B. Yeah, that means आप electric field due to point charge B लिख रहे हो, जिसको आपने denote करा है with the symbol of EB. So it is given by EB vector is equal to, yes, by using this formula KQ divided by R square. R is the distance between these two charges. So its distance is A square. Is it clear? So similarly, second terms you will find that is the electric field intensity due to the point charge B. Electric field due to point charge C. Yeah, point charge C के accordingly आप देख रहे हो. That means you should denote it with the symbol of EC and you can write it like this KQ divided by A square. ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा. बिकॉज हमने यहाँ पे क्या है, साइन को कंसिडर नहीं करना है. वी विल सी जस्ट द मैग्नीट्यूड रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बिकॉज दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन आवर प्रीवियस क्लास की. मैंने आपको कल भी बताया था कि चार्जेस हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं करने हैं. दैट मीन्स उसके सिंबल नहीं कंसिडर करने हैं. वी विल कंसिडर डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ द चार्ज. सो ये आपके पास क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. We need to find the net electric field at the point A here. A पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो अपना इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, अपना इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, तो हमने क्या करना है? देखिए, दिस इज योर E B and this is your E C and the angle between them is 120 degree. Whenever the two vectors are there and we need to find their resultant, then their resultant is represented by their diagonal. Yes, जो इसका resultant रहेगा उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? उसके डायगोनल पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. तो डायगोनल के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो रिप्रेजेंट करने के बाद we also know that कि टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो. अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी कर लिया है. रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta here. Here are two kind of the electric field EB and EC here. So you will write directly here कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना है. सपोज दैट आपने EB और EC को क्या ले लिया? E कंसीडर कर लिया. EB is equal to EC which is equal to E. बिकॉज ये देखोगे आप कि आपके पास क्या आ रहा है? सेम आ रही है वैल्यू. सो यू विल राइट इट लाइक दिस. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. Resultant at the point A here between the two vectors you will write E square plus E square plus 2E square cos of theta. Yes. Now the causes of theta here. What is the angle between them is 120 degree. Now who will tell me what is the value of the cos 120? This thing you need to remember here. Cos 120 is that is minus 1 upon 2. Is it clear? जिसको नहीं याद है, you can write on the side of your notebook. Cos 120 is minus 1 upon 2 here. So ये एंगल आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे? यूज करोगे. After that you will get the
resultant value of your system. 2e square, again 2e square, and multiply with minus 1 upon 2. Yeah, 2 and 2 can be cancelled out from here, and you will write 2e square minus of e square. So 2 में से 1 minus किया, that means you will get the e square, and here you will write again resultant of this vector is equal to your e. Here, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. So what is the value of the e here? You can choose from any one equations. Either you will take the first equations or you will take the second equations. Then you will write it like kq divided by a square. So this is your final result, that is the net electric field at a point a here. ये आपके पास जो resultant है वो आपके पास क्या है, net electric field at the point a. So simple, very simple. कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पहले रिप्रेजेंट किया, और फिर हमें पता होना चाहिए टू वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है उसको आप किसके साथ डिनोट करते हो, ई आर के साथ डिनोट करते हो, और उसका जो रिजल्टेंट है हमेशा उसके डायगोनल के साथ हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो डायगोनल के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी आल्सो नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन दैम. उसका क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए. दिस इज द फॉर्मूला. इसको यूज करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट अपनी नोटबुक के ऊपर, जिसको जो टर्म्स नहीं समझ आती है यू कैन आस्क. You write down the next question. ये था आपके पास triangular form. Yeah. Now we are considering the another questions in the square form. Is it clear? जैसे हमने पहले करा था, because we need to do some applications which is based on these concepts, and these applications are also included in your NCERT syllabus. You can check out your back exercise of your chapter and small questions which is based on this, and try to sort out this, and then you will get your results and of the different kind of problems here. So now the next questions, write down question number 2 here. Yeah. Now we need to consider the charges in the sphere form. Suppose that I am considering here one sphere. Yeah. This is the sphere, and same kind of the charges are placed on it. Same kind of the charges. Suppose that this is A, B, C, and D. Yeah. Same kind of the charges. Plus Q, and here is plus Q again. Now the question is find the net electric field at the point C. So what is the net electric field at point C? This is our question. कि हमारा क्वेश्चन क्या है, we need to find the net electric field at the point C here. Point C के ऊपर आपको क्या करना है, इसकी net electric field को find out करना है. अगर इसकी net electric field को find out करना है, that means we need to calculate the net electric field at a point A, B and D here. तो जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास क्या था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल होती है, E1 plus E2 plus E3 एंड अप टू सो ऑन. जितने भी चार्जेस आपने अपने सिस्टम में कंसीडर करे हैं उन सभी का सम आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. यस. सो स्टार्टिंग of this question will remain the same. कैसे स्टार्ट करोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही है, यू शुड ड्रॉ इट हियर. ओके, स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ, ट्राई टू डू दिस. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट C here, and due to the point D charge its direction is like this. Here, this is the direction of your ED vector, because we are considering here a small test charge. जो आपके पास small test charge है उसको अगर आप Q नॉट के साथ भी रिप्रेजेंट करते हो, we also know that वही जो small test charge है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव Q चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. आउटवर्ड डायरेक्शन होती है तो ये इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड. तो सिमिलरली ड्यू टू द पॉइंट B here and its direction is EB vector is like this. Is it clear? So जो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट, that is due to the A. देखिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा आपके पास इंक्रीज कर दिया, here है तो डिस्टेंस बिटवीन them is will remain the same all the sides. ठीक है.
तो ये आपके पास डिस्टेंस है ए। तो हमें क्या करना है, ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट्स के कारण जो इसके पास आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, दैट इज टुवर्ड्स द सी, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ई ए वेक्टर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी हियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई बी और ई डी की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ई ए वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। सो अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आई विल ड्रॉ इट लेटर। सो फर्स्टली यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, स्टार्ट करिए अपना सॉल्यूशन। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C due to the charge at B। क्लियर? सो B पॉइंट के कारण C पॉइंट के ऊपर क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है। सो यू कैन राइट इट, E B वेक्टर इज इक्वल टू योर K Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द point B charge। Okay, so similarly same line you will write it here, electric field intensity at a point C due to the point charge which is placed at a point D here. So D here you will write it ED is equal to your KQ divided by A square. You can see both these terms are same here, A1 and first equation as well as your second equation, both the equations are same, so you will take it right, like E B is equal to E D is equal to E। आपने इसको क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लिया, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, अमाउंट सेम आ रहा है। अगर आपके पास अमाउंट सेम आ रहा है देन आप इसको क्या लिख सकते हो, एक अनदर सिंबल लिख सकते हो, ई सिंबल लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेम, इफ यू आर मेकिंग दिस डायग्राम डिफरेंटली, here this is your E D and here you will make a E B here, angle between them is 90 degree, is it clear? Now again the resultant between these two vectors is represented by their diagonal, that means this is your resultant which you need to find। again you will use the same formula here for your resultant, here resultant के लिए आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूले को यूज करोगे, तो वही सेम फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, you will represent here, देखिए I will do this question here, find out कीजिए, you know the formula of your resultant term, yes, do it fast, those who are done you should tell me। okay, then resultant between E B and E B vector, so आप इसको E R के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज E square again E square plus 2E square cos of 90 degree। Yes, cos is 90 because this is your E D and this is your resultant। तो इन दोनों के बीच में जो आपके पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, that is the 90 degree and we also know that cos 90 is 0। Yes, its value is 0। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2E square आ जाएगा and 0 multiply something is 0 and you will get the result is which is equal to 2E square and its square root। so how you can write it like this, E square root of 2, this is your resultant electric field। clear? तो ये आपके पास क्या है, resultant electric field है between these two vectors। so this is your third equation, ये आपके पास third equation हो जाएगी। yeah, now the next step is this, you can see I am saying that the direction of EA is look like this, this is the direction of your EA, that is electric field due to the charge which is placed at a point A here। so next step आपके पास क्या रहेगा, if resultant as well as EA both the directions are same, that means they are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी है, दैट मींस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल electric field at point C is given by, yes, how we can find it, like electric field, that is net electric field आप लिख सकते हो at a point C here which is equal to
plus of ER, where ER is the resultant of these two vectors, EB and ED here. So write down the values here by using your equations. Okay, one thing more. The distance between these 2 points A and C. Who will tell me? By using the Pythagoras theorem here, you will get the distance between these two terms. कि A और C का distance आपके पास क्या रहेगा? ये इस फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए. क्या बनेगा आपके पास? A square plus A square. You will get 2A square. That means A root 2. So this is the distance is A root 2. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा? A root 2 आएगा by using the Pythagoras theorem here. So अब आपने क्या करना है? सिंपली इसकी वैल्यू को पुट करना है. चलिए EA की वैल्यू क्या है आपके पास? EA that is KQ divided by A square. So A की वैल्यू आपने क्या लेनी है? A root 2 and its whole square plus ER है आपके पास E root 2. Yeah. So in the next step you will write it EQ divided by 2A square. जब आप इसको स्क्वायर ओपन करोगे you will get the result as 2A square plus you will put the value of E here from any one and second equations. First और second में से आप कोई भी equation choose कर सकते हो. So both the equations are same. KQ divided by A square into root 2. So in the next step what you will do, that is the similar terms you will take it outside. आपने उसको क्या लेना है? Common ले लेना है. And you will write it outside the similar terms. You will get the result in the form of 1 upon 2 plus root 2. This is your final result. You can also do its next step, but it's sufficient up to this. कि आपने result ही find out करना. Either you will take the LCM here and you will write it in the another form. So this is the final result of net electric field at a point C here. तो आपने क्या किया? Point C के ऊपर net electric field को find out किया. Now our question is, next step is, what is the direction of the net electric field? Net electric field की आपके पास direction क्या रहेगी? That is along the AC. AC के along ये जो आपके पास net electric field आ रही है, total electric field आ रही है, यही इसकी क्या रहेगी? Directions रहेगी. So in the last step you will write the direction of the electric field is along AC vector. That is direction of electric field. That is net electric field along, yes, AC vector. Yeah, electric field की डायरेक्शन आपके पास क्या आ रही है? This one. A और C को आप एक्सटेंड कर रहे हो ना, जहाँ पे आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वही उसकी क्या रहेगी? आपके पास डायरेक्शंस रहेगी. सो दिस इज द टोटल रिजल्ट ऑफ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं. ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स कि हमने क्या किया. एक फील्ड को कंसिडर करा और आपके पास क्या है? सिंगुलर चार्जेस उसके ऊपर दिए हुए हैं. पहले एक पॉइंट के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, फिर ड्यू टू सेकंड चार्ज, फिर ड्यू टू थर्ड चार्ज, देन एट द last or in the end you will sum all these electric fields and you will get the net electric field at the given point. Clear? Okay. Now the next question is, I hope ये आप सभी को समझ आ गया है. Okay, now let's go for a next question. इसको note down करना है. You should note down this on your notebook. And these are the questions which is based on your board exams. ये board exams के ऊपर based है questions. So try to understand this. बहुत ही easy है. अगर आपको एक बार concept समझ आ जाएगा, then no need to learn and no need to memorize these results. Yeah. Now our next question is, two charges are given. Two charges are given which are of different kind or different in nature. Suppose that first charge is plus Q and second charge is 4Q. We are considering here the two different charges. I will draw the diagram here firstly so that it can be easily clear to all of you. क्योंकि जो हम डायग्राम या सिंबल यहाँ पे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से आपको क्या है वो इजीली क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या. फर्स्ट चार्ज, so this is your second charge. First charge and second charge both are of the different nature. That means plus Q and here is plus 4Q. Polarity will remain the same but amount is different. Here polarity same है but amount different है. That means आपके पास first है Q charge और second है आपके पास 4Q charge. अब आपको क्या करना है? That means where the electric field is zero. My question is where
the electric field is 0. अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट टर्म में EF ही लिखूंगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. द मीनिंग ऑफ द EF इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर इसका सिंबल भी डिनोट कर सकती हूँ, दैट इज द E वेक्टर. E वेक्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. सो वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब हमारे पास टू चार्जेस गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो गिवन. सपोज दैट इट्स डिस्टेंस इज L. क्लियर? अब मैंने क्या किया था, जब आपने कूलम स्लो किया था तब भी हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था. तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, व्हेन बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी, सेम काइंड ऑफ द नेचर, दैट मींस बोथ आर ऑफ द सेम पोलैरिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, देन द टोटल फोर्स is 0 at its center. Yeah. So same thing is there. We need to find out the electric field now. That means जो electric field है at the center point पे आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी. Because हमारे पास क्या है, 3 cases इसके arise हो सकते हैं, on the left hand side, at the center and on the right hand side. If we are saying that the charge is placed on the left hand side, suppose that this is the point P here, where we need to find out the total electric field. Yeah. Then electric, this is your first charge, this is your second charge. So electric field due to the first charge, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्या? So electric field due to the second charge, again उसकी डायरेक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. अगर इसकी डायरेक्शन भी सेम हो गई तो ये दोनों 0 नहीं हो रहे हैं, because they are parallel to each other. ये आपके पास मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. So similarly if you are considering on this, E1 की डायरेक्शन भी सेम आ जाएगी, E2 की डायरेक्शन भी सेम आ जाएगी, तो ये स्टेप भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया. तो अब हमारे पास कौन सी पोजीशन लेफ्ट बच रही है, दैट इज एट द सेंटर. दैट मींस वी नीड टू प्लेस अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 हियर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0, तो वहां पे आपने क्या करना है, इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे बिगर चार्ज है, अमाउंट इज बिगर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. दैट मींस जो स्मॉल चार्ज है वो कम अपनी स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और स्मॉल चार्ज ने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, बैलेंस करना है. तो जब इसको बैलेंस करना है, कोई आपके पास बिगर चीज है और कोई आपके पास स्मॉल चीज है, दैट मींस स्मॉल चार्ज को हमें बेनिफिट देना चाहिए ना. तो हम वो पॉइंट किसके नियर अबाउट प्लेस करेंगे, दैट इज नियर टू द स्मॉलर चार्ज. आपने उस पॉइंट को नियर टू द स्मॉलर चार्ज प्लेस किया. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट A, दैट इज फर्स्ट, तो ये आपके पास क्या है, E1 वेक्टर. ड्यू टू द सेकंड, दैट इज E2 वेक्टर. ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. बोथ दे आर लाइज इन द opposite directions. If they are lies in the opposite directions, that means the net electric field at that point become 0 here. Opposite direction में lies कर रहे हैं, तो total electric field आपके पास क्या रहेगी, इसकी 0 रहेगी. If total electric field is 0, suppose that the distance between them is small h. अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया है आपने P, क्लियर. तो इन दोनों के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है हमने इसको सपोज कर लिया, दैट इज द x here. If small distance is x, then what is the distance between these two charges? तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल L minus x here. क्लियर? These are the general calculations. डायग्राम बनाना है आपने नीट एंड क्लीन वे से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहले रिप्रेजेंट करना है ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, देन ड्यू टू द सेकंड चार्ज, देन यू विल फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P here. So P पे आपने सपोज कर लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, and we need to place a point near to the smaller charge because second charge is bigger than the first one. So we need to balance these points. हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है. तो जैसे ही हमने इसको बैलेंस करना है तो हम इसके पॉइंट्स को नियर टू द स्मॉलर चार्ज प्लेस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर इट्स कैलकुलेशंस. अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया है, देन कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल. सो सॉल्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को क्रिएट कर रहे हो. अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को क्रिएट करोगे तो आप जल्दी आप इसको क्या करोगे, इक्वेट करोगे. दैट इज E1 इज इक्वल टू E2 वेक्टर. क्लियर?
तो सिंपली हम उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जब हम उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो आपको क्या करना है, E1 इज इक्वल टू E2 करना है। सो E1 एंड E2 की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय योरसेल्फ, बिकॉज आप सभी को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q divided by A square, which is equal to K Q1 here, Q2 here divided by A square. A means the distance between them, and Q1, Q2 we are considering the two different charges here. So electric field due to the first charge. First charge के ऊपर कितना charge placed है? That is plus Q. You will write it K Q divided by, and distance between them is x square. And here you will get K Q. कितना अमाउंट है? Yes, 4 times of Q divided by A square. And A square की वैल्यू आपके पास क्या है? L minus x and its whole square. Now this is your mathematical equations. ये mathematical equations आ जाए तो आपको फटाफट से सॉल्व आउट करनी आनी चाहिए, because you are a student of mathematics also. जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैथमेटिक्स टेक्स्ट पे ही होगा. So try to sort out this. This is the your algebraic equations. So equations given है आपके पास, आपने सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. So in the next step what we will write, I am doing it here again. Try to sort out this. Yes. So in the next step you will write like a K Q divided by x square is equal to 4 times of K Q divided by L minus x and its whole square. Similar terms can be cancelled out from here. This term is shifting towards the another side, and you will get the result is like this, and you will get here that is 4. Yeah, 4 को आप कैसे लिख सकते हो? That is 2 and its whole square. Whole square can be cancelled out from both the side, and you will write it L upon x minus of 1, which is equal to your 2. Yeah, and in the next step 1 is moving towards the another side, and it will get plus. That means your total result will be 3 here. So what is the value of the x from this equation? Yes, x is equal to L divided by 3 here. अब यहाँ पे आपने जब स्क्वायर रूट कैंसिल किया, यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है? प्लस माइनस 2 आ सकता है. We are considering here the plus 2 only. If we are considering the negative, suppose that L upon x minus another case है इसका is equal to minus 2 if you are taking. That means plus 2 and 1 move towards another side. Here is minus 2 plus 1, and you will get the minus 1 answer. Minus 1 which does not exist here, तो आप इस टर्म को क्या करोगे? निग्लेक्ट कर दोगे. So you will take this one only. So L upon 3 आपके पास कहाँ पे लाइज कर रहा है? Between the two charges near to the smaller charge. तो कहीं ना कहीं पे smaller of the charge के near about क्या है? आपके पास place है, उसके near about लाइज कर रहा है. So this is your result. That is the electric field intensity is 0 at the center between the two charges. अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगी. एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ऐसे आपको ये भी समझ में आना चाहिए, which is very much easy. अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट पता है, then you can sort out this equation within 1 minute. Now the shortcut term is shortcut. Yeah. शॉर्टकट आपके पास क्या एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके इसके रिजल्ट को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ द चार्जेस है. अगर आपके पास क्या है, जो चार्जेस है वो सेम काइंड के, तो इसका फॉर्मूला जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए. x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ q1 स्क्वायर रूट ऑफ q2 plus square root of q1 here and multiply with L. So this is the shortcut way in which you are using the direct formula to find out the exact answer of this equation. Yeah, तो इसको यूज करके आपके पास क्या है कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाता है. बट कंडीशन इज दिस, q1 is smaller than q2. जो q1 चार्ज है वो हमेशा स्मॉलर होना चाहिए q2 चार्ज के लिए, और पोलैरिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. That means both the charges are of positive in nature or negative in nature. Polarity will remain the same. तो ये फॉर्मूला आप वहाँ पे यूज करोगे. जैसे आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, try to sort out this. Yes, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं. x is equal to, वेरीफाई कीजिए कि क्या आपके पास आंसर आता है L upon
Q1 की वैल्यू है Q एंड Q2 की वैल्यू है आपके पास 4Q plus Q1 is again Q and multiply with L here. Yeah, and after that you will write it here. आपने क्या किया, इसको सॉर्ट आउट किया. ये क्वेश्चन में इधर मूव कर रही हूँ. X is equal to Q can be cancelled out from all the equations. Here is 1, 4 का square root that is plus 1 here. Here and multiply with L here. 4 का square root क्या होता है, that is 2. 2 plus 1 multiply with L and you will get the result L divided by 3 here. Yeah, X का result क्या आ रहा है, L divided by 3. जो शॉर्टकट में से कर सकता है, you can remember this formula for the similar kind of the charges and condition is Q1 is smaller than Q2. तो डायरेक्टली आप इसको वेरीफाई करके इसका एग्जैक्ट आंसर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो if this question is coming in your MCQs list. Here, okay. Now let's go for the next question, but which is similar to this one. We will take something is different in this case. वो हमारे पास क्या होगा, that is charges are of different polarity. Different polarity we need to make a diagram again here. अब different polarity है तो उसके लिए हम उसका शॉर्टकट में भी देखेंगे so that it is easy for you also कि आप उसको easily क्या कर सको, solve कर सको. अब charges आपने लेने हैं different Q1 and Q2 here. So I am supposing that Q1 and its value is plus Q. Here plus Q and here I am taking the minus 9Q charge. Again the distance between them is same L. Okay, suppose that where the electric field is 0 here. Question is same again कि हमें क्या find out करना है, where the electric field is 0. Where the electric field is 0, here is small q plus q. Distance between them is L. Here, if we are placing the charge at the center, अगर आप points को center में place करते हो तो electric field due to the E1 charge तो हो जाएगी इस direction में, तो E2 भी क्या आ जाएगी same direction में. That means ये आपके पास क्या क्रॉस हो गया. तो आपके पास जो पॉइंट है वो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द चार्जेस प्लेस होगा. ये मैंने पहले भी बताया था. If charges are of different polarity, that means point is lies outside of the charge. Either it will be on the left side or it will be on the right side. If we are placing the point at the right hand side, you can see here is the bigger one charge. Bigger one charge, that means its effect is larger or more as compared to the plus q charge as compared to the smaller one charge. कि ये जो bigger charge है इसका effect क्या होगा, ज़्यादा होगा. So this condition is not possible here. So we need to take a point on the left hand side of the line. So I need to prove that here we are putting a point here. So we need to see the electric field at a point P. Clear? So at point P के ऊपर this is your first charge, this is your second charge again. These conditions are not possible in this case. So we will take a point on the outside that is near to the smaller charge. So due to the Q1 charge, Q1 इसको क्या करेगा, repel करेगा. Because its polarity is positive in nature, electric field due to the E1 charge is directly outward. So second charge जो है वो आपके पास negative charge है. Negative charge की direction आपके पास क्या होती है, वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ attract करेगा. अपनी तरफ attract करेगा, that means आपके पास जो है E2 इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई, फिर opposite आ गई. that means they are opposite in directions, then the net electric field can be cancelled out at that point and the total electric field becomes 0 at the point P here. Question is simple again, everything is given here and the distance between them is small x. Yeah, if the distance between the Q1 and point P here is small x and the total distance between this two term is L plus x है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हमारा पास इक्वेशन सेम रहेगी. वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज 1 एंड ड्यू टू द सेकंड चार्ज. फिर उसके बाद हम उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, net electric field is given by due to the first charge and due to the second charge. Again the equilibrium condition is this. Equilibrium condition is there, that means you just equate these two terms E1 and E2 here. Now you already know
what is the value of the electric field here? Electric field की वैल्यू आपके पास क्या होती है? K Q divided by A square. K Q2 divided by A square here. Clear? So K Q divided by A square here. अब आपके पास next step क्या रहेगा? Yes. Now change the values here. Change करनी है आपने values को. So I am doing it here. K can be cancelled out from here. Q1 की वैल्यू है आपके पास Q divided by A is x square, which is equal to your 9Q divided by A की वैल्यू क्या आ जाएगी L plus x and its square. Q can be cancelled out. Again L plus x divided by x and its whole square, and you will get the 9 here. You will write it like this, that is 3 square. और ये आपके पास क्या आ जाएगा plus minus of 3 when the square can be cancelled out from both the sides. So when square can be cancelled out from both the sides, then we will do its next step. We will not considering here the negative term because वो आपके पास negative result आ जाएगा, which is not possible in this case. So we just taking it L upon x plus 1 is equal to plus 3. So 1 can be shifted towards the another side. You will get the result L upon x is equal to 3 minus 1, that is the 2 here, and L upon x is equal to 2, or you can write it like this, x is equal to L divided by 2. That means आपके पास जो point है वो कितना आ रहा है, x is equal to L divided by 2 here. तो ये आपके पास आ गया आंसर इस डिस्टेंस का. Now the shortcut for this, shortcut way, ये भी आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट कीज जिसको यूज करके आप विदिन 1 मिनट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. इफ द चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी, चार्जेस जो है वो आपके पास डिफरेंट पोलैरिटी के हैं, देन यू नीड टू यूज अ फॉर्मूला इन दिस वे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे आपने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया है, सेम काइंड ऑफ द फॉर्मूला इज यूजिंग हियर, बट समथिंग इज डिफरेंट. व्हिच थिंग इज डिफरेंट? q2 minus of q1. Different polarity and the negative sign will be there. If the charges are of similar polarity, then you need to use a positive sign here. Clear? Nothing is different. Anything else? तो सिर्फ एक प्लस माइनस का डिफरेंस है, उसी को आपने याद रखना है और इसी से आपके पास क्वेश्चन जो है वो इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. सो जस्ट वेरीफाई दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस कि आपके पास रिजल्ट आता है L upon 2. Q1 की वैल्यू है Q, and here you will write the 9 Q condition will remain the same, Q2 is greater than the Q1. Here you will write Q. Yeah, and after solving this you will get the result 1. Q can be cancelled out, and 9 का square root of 3 minus 2, and multiply with L here. Yeah, so multiply with L. Again यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास L. So x is equal to 1 divided by 2 multiply with L, that is L divided by 2. Same answer. That means this formula can also be used for these kind of the questions here. Clear? I think it is clear to all. Okay, these are the applications of numericals which is based on your electric field intensity. Now one thing we have to do now, that is the graph between them. 1 marks में आपके पास क्या आ जाते हैं, ग्राफ भी आ जाते हैं, which you need to plot between the E versus X here. So E versus X, I think this term we also have done in our previous lecture. हमने अपने previous lecture और previous class में भी ये किया था कि आपके पास क्या आ जाती है, term आ जाती है इसकी. ग्राफ ऑफ स्मॉल सा टॉपिक कर लेते हैं, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X, where X is the distance between them, between the two charges here. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है which is inversely proportional to the square of the distance between them. If it is inversely proportional to the square of the distance between them, that means the graph between these two terms, we are taking here x axis and we are taking here y axis, and we need to take the electric field along the y axis, x is along x axis. तो ग्राफ आपके पास क्या आता है, in this way. Graph is look like this. This you have already done. Now you need to remember something else. कि आपने क्या करना है. You also know that the number lines, like यहाँ पे आपकी positive x axis होती है. This is your negative x axis, and this is your positive y axis, and this is your
नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज योर सेंटर। क्लियर? ये आपके पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पे आपके पास दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो रहती है। सो ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स ली जाएंगी, यहाँ पे नेगेटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड अगेन डाउनवर्ड इज नेगेटिव। नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के लिए है ये ग्राफ वर्सेस ऑफ ई वर्सेस एक्स है, ये 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है कि अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, देन यू शुड प्लॉट इट ऑन द वाई एक्सिस। ई फील्ड